Ladies and gentlemen, this is Santosh Kumar Tiwari. Once again, I am there with you to share something new. This time, this is love and relationship. My dear friends, लव एंड रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला. आई टुक सम टाइम, देन फिर मुझे लगा कि इट्स वेरी टेक्निकल टॉपिक. राधा और कृष्ण के इस देश में लव और रिलेशनशिप में इतना बड़ा लोचा, मुझे लगा कि इस पे कुछ बोला जा सकता है, कुछ शेयर किया जा सकता है. सो टेकिंग द क्यू ऑफ योर रिक्वेस्ट, आई वोंट टॉक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप टुडे. दोस्तों, हमारे देश में लव एंड रिलेशनशिप को एक ही माना जाता है और इसके मैनिफेस्टेशन पे हमारी जिंदगी चल जाती है. काम चलाने वाली बात है, चल जाती है. क्यों? क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है. और दूसरी बात कि मैनिफेस्टेशन से काम चल जाए तो फिर क्या जरूरत है इसके बारे में जानने का. टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि कहा जाता है कि पेट के भूख के बाद सारी भूख लगती है. और हमारे में से बहुत सारे लोग, आई मीन मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज बिजी मैनेजिंग द स्क्वायर मील. और दूसरी बात कि क्यों जाना जाए, सही बात है. मैनिफेस्टेशन, लव एंड रिलेशनशिप का मैनिफेस्टेशन क्या होता है? सेक्स. एंड सेक्स इज द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जेंटलमैन एंड द फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट. और उसके बाद बच्चे हो जाए, फैमिली ब्रिंकअप हो जाए, तो काहे का लव और काहे का रिलेशनशिप. इट्स ऑल इन द सेंस ऑफ द पीपल एंड अप मिंगलिंग अप इन वन, एंड दैट इज फैमिली. दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ आवर परसेंटेज, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, ब्रिंग अप ए फैमिली, एंड देन the time comes for telling bye bye to this planet without actually having known that what is love. बच्चे होना, फैमिली ब्रिंग अप करना, शादी करना, these are all the examples of a relationship. And the relationship, ladies and gentlemen, is an unwritten contract between two people. It's just a contract between two people for sharing the work and responsibility, for compromising on the likes and dislike, for compromising on the comfort and discomfort, and in turn, over the period of time, we lose our basic traits and the characteristics. And over a long period of time, we lose our identity itself. इस relationship में पढ़ के हम केवल compromise करते हैं on dislikes, comforts, works. It's just a contract. Again, to elaborate further, relationship, human relationship needs a lot of attention initially. Or attention is like, have you seen the juggling of balls? When you miss your attention, the ball, some of the ball falls on the ground and the game is over. Similarly, in a relationship, when the person misses attention, he or she misses the person. Why? Because he or she may be having more people than you who can provide much more attention than you at that point of time. Again, for a relationship, I'm explaining relationship first and then we'll talk about the love. For a relationship, you look on some person for getting into a relationship from many different angles, and you match up. In turn, you match up the expectation with that person, and for matching up expectation, you look at him or her for his or her color, shape and size, earnings, authority, beauty, handsomeness, and so many things. And when your expectations matches up to him or her, then you get into a relationship and then you call it a love. No, my dear friends, that's not love. आपने बस अपनी रिक्वायरमेंट को के लायक चीज़ें ढूंढी, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए एक व्यवस्था किया, अपने लाइक माइंडेड को ढूंढा और अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैच कराया, सारी कुछ देख के एक अरेंजमेंट किया आपने, एंड देन यू कॉल इट अ लव. दैट्स नॉट द लव. Love is not a contract, it is
above contract and expectations, my dear friend. Love is not a contract. It's a sweetness of feeling inside you. Love एक feeling होती है. Love does not require double-sided and one-sided. It can happen to anyone. You can love your smartphone. Radha and Krishna का love था. There was no name tape. Relationship requires a name tape. What is a name tape? Sister, brother, husband, wife. These are the name tape requirement of a relationship. But is that love which requires name tape? No. It does not require a name. It's just a sweetness of feeling inside you, and it gets stimulated by someone wherein you radiates your feeling. Number 3, that love is an energy. It's limitless. It does not have any bound. अभी आपको एक चीज और बताऊं कि रिलेशनशिप कैन डाई आउट बट लव कैन नेवर डाई आउट. रिलेशनशिप कैन ब्रेक बट लव डज नॉट ब्रेक. Why it does not break? Do you know why? Because relationship में you search for a right person. And ladies and gentlemen, there are no right person in this planet. Everybody has his or her own nonsense. You have your own nonsense. He or she must be having his or her own nonsense. And in a relationship, you match up nonsense with nonsense to make up a relationship. But love is above all nonsensical things. Love does not have any nonsense matching because it does not need matching with the people. So therefore, love is love. Love is not equivalent to care, attention, attraction, fear, sadness, fulfillment, regret, repent. These all kind of things से ऊपर है love. Love does not have any boundary. It's limitless energy which is all pervasive. Relationship can be one-sided or double-sided, but love does not require any side. It's all pervasive. I hope, my dear friend, that in this short video I have provided little bit of information on love and relationship. I believe that you must know little bit of things of love and relationship. Thanks for watching. Thank you. Jai Hind.